Good morning, everyone. How do you do? I hope that you all are enjoying the classes. And this is the period where you have to just go for your syllabus and complete it. This is the time that you are having to just give some sorts of leading position in comparison to the others, those who are just waiting for opening their schools. So they are wasting their time. But I hope that you all are just taking the advantage and just completing your syllabus. Now, today we are going to start a new topic. That is, as I have written, the revolution of liberals. We all are familiar with the term liberals, as we were discussed about the liberal nationalism. Liberal nationalism stands for a representative government, a parliamentary government based upon universal adult suffrage. And in the economic sphere, it demands about uniform economic policies, means reduction of taxes, uniform currency, uniform weight and measurement. So we have gone through about those things. We have also seen the age of revolution from 1830 to 1848. While discussing about the age of revolution, we have also discussed about the condition prevailing in Europe, socio-economic condition prevailing in Europe. And we have seen this was the period when the population of Europe was increasing very rapidly. And as the population was increasing, there was a great demand of crops. But the production of crop was not at par to fulfill the needs of the growing population due to the drought, due to the bad weather condition, bad harvest. So ultimately what happened? It led to the price rise. Peasants had to pay more taxes. At the same time, job opportunities will reduce, especially in the rural areas. So there is a huge migration from rural to urban areas. Now this migrated population were getting the space to live in slums, and the living condition of slums were not very good. There was a huge crowd, no sanitation, no facilities, but people were compelled to live. So this was the condition that was prevailing in society. At the another side, there is a crisis related to economy. So this is a kind of dissatisfaction prevailing among the poor, peasants, deprived ones, and they were the major force behind the revolutions that had happened in 1830 to 1848 in different parts of Europe. At the another side, parallel to the revolution led by this poor community, deprived ones, liberals, educated ones, means professionals, were also not happy with the existing socio-economic political system. This middle class, always remember, I emphasize again and again on this particular point that wherever there is a revolution, in most of the occasions, it was the middle class that led the revolution. Remember, that is the fact. So, when there was a great angerness, dissatisfaction prevailing in the European society, at the same time, a group of new middle class, the professionals, educated ones, they were just raising their voice for the change. So both these factors come together to create that age of revolution. Now, 1848 was very important to the history of nationalism in Europe. How?
As you remember, we have gone through that after 1850, conservative regime was introduced in Europe, and it was the Austrian Chancellor Duke Metternich who had introduced the system of conservatism. This conservatism goes the idea of liberal nationalism. But we have also seen liberal nationalism was just getting a hold in the society as conservative regimes were completely failed to serve the society because they believed in the traditional system, means they believed in the divine right of kingship, where they felt that king do not accountable in front of the people. They are also against the representative form of government. They believe in autocratic monarchy, divine right of kingship. And at the other side, during the Napoleonic period and after the French Revolution, European society had already came to know about the constitutional monarchy, republican form of the government, about the rights. The French Revolution echoed equality, liberty and fraternity. And different parts of Europe, people of those areas have tasted the fruits of that French Revolution. So they were retaliated against that conservative regime, and it was led by liberal nationalists. Liberal nationalists were the people belongs to that new middle class comprising professionals, educated ones, teachers, prosperous businessmen. They were the part of that. And we have seen in 1830, at first there was a revolution in France through which conservatism was again dismissed from France and Louis-Philippe had made the king. Again Louis-Philippe was removed in 1848 as with the aspirations, with the hope through which Louis-Philippe was given the throne of France. Louis-Philippe failed to fulfill those things. So people again raised a voice for the change. So in 1848, in France, there was a change, and a new government came in France that granted universal adult franchising over here, male suffrage. Remember, male, not for women, and all the men 21 and above, they have got the right to vote, and there is an abolition of monarchy को खत्म किया गया. तो ये 1848 का रेवोल्यूशन फ्रांस के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, बट ये लिबरल नेशनलिज्म की जो बात है, जो न्यू मिडिल क्लास है, ये कुछ और भी आगे कर. मैंने हिंट किया था कि क्यों इसे एज ऑफ रेवोल्यूशन कहते हैं, क्योंकि इस पीरियड में फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के हम लोग पढ़ चुके, सभी जगह उथल-पुथल होगी. पोलैंड, हर जगह कुछ न कुछ होता रहेगा. हम उनमें से कुछ ही घटनाओं का यहाँ पे उल्लेख कर रहे हैं. क्यों? Because these are more important. There is a wide horizon to discuss regarding these nationalism. But within the speculated time, within that particular time frame, we have to go with the certain topics. So now, what had happened in Germanism? As I have told you, during the Napoleon period, German region was having more than 300 small units. A small 300 units, more than. And during the Napoleon, it was just reorganized into 39 states, a confederacy of 39 German states. If you remember, there was Wolverine also, that was just working for economic unity in German states. So now, in 1848, these liberals, new educated middle class, they came together. A number of political parties were also formed, and these people came together to just form what that is called the National Assembly. And through the election, there
And again, this German National Assembly that took the place, that is called the Frankfurt Parliament. ये इनकी पार्लियामेंट थी, इसका नाम था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, सेंट पॉल चर्च में इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में 1848 में इलेक्शंस के बाद लगभग 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आए। दे वर द मेंबर ऑफ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। ये जर्मन असेंबली आ रही है, बहुत बड़ी बात है। मैंने क्या कहा था, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बात करते हैं लिबरल्स। तो ये लिबरल्स रेवोल्यूशन के बाद 1848 में इन जर्मनी देयर वाज अ पार्लियामेंट कॉल्ड फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट comprising 831 members, and most of these members belongs to that new middle class. This particular Frankfurt Parliament, they have started their work and framed the constitution for Germany, and they just invited the Prussian king Frederick William IV to lead the German Confederacy, but at the same time the National Assembly, the Frankfurt Parliament, has drafted a constitution that stated that king shall be the subject of constitution. Means the Frankfurt Parliament drafted the constitution, advocated for constitutional monarchy, मतलब राजा की ऑटोक्रेटिक पावर को इसने चेक कर दिया और इसने कहा कि राजा भी संविधान के तहत आएगा, यानी राजा के ऊपर भी एक चेक लगा दिया। राजा के ऊपर एक चेक लगाना, that was the things that made Frederick William, the king of Prussia, very annoyed. King of Prussia was firmly believed in absolutist monarchy. He was not ready to compromise with the powers of king. So he rejected the proposal of Frankfurt Parliament, that means the new constitution, and he also dissolved the Frankfurt Parliament too. This is the one side of the coin. But the another side, what had happened? Same person, means the German, the Prussia, is going to lead the quest for German unification with the constitutional monarchy very soon. That is the change. बहुत जल्दी वहां चेंज आने वाली है, लेकिन ये शुरुआत कहां हुई? ये जर्मन रीजन में रहने वाले लोगों की अभिव्यक्ति थी कि they need a constitution that keep monarch as a subject of constitution. जो मोनार्की के पावर को चेक करने की बात कर रहे थे, ये जर्मन लोगों की भावनाएं थी। भले ही उस समय फ्रेडरिक विलियम IV, द देन पर्शियन किंग, उसने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन हुआ क्या? देखिए, इस प्रकार की घटनाएं यूरोप के कई हिस्सों में बाय एंड लार्ज 1848 में कंजर्वेटिज्म और लिबरल नेशनलिस्ट के बीच में एक कसमकश चल रही थी, और इस कसमकश में कंजर्वेटिव्स कई बार भारी पड़े। They just managed to suppress these kind of revolutions, but they realized, the autocratic kings of different states of Europe, they realized that now it's a time to go for change. चलिए पर उन्नत थी यहाँ पर in France, in German states, फ्रेडरिक विलियम IV ने न केवल फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया और इस कॉन्स्टिट्यूशन को रिजेक्ट किया, but he also entered into an alliance of the autocratic monarchs existing in Europe to have an alliance against such kind of liberal nationalists. इंटरेस्टिंग बात है, देखिए 1848 में प्रशिया विरोध कर रहा है, और यही प्रशिया 1871 के साथ खड़े होकर के, बिस्मार्क के साथ खड़े होकर के यूनिफिकेशन की बात करने वाला है। जिन डिमांड को फ्रेडरिक विलियम IV ने
ऑस्ट्रियन किंग ने रिजेक्ट किया 1848 में, उसी चीज को आने वाले कल में ऑस्ट्रिया स्वीकार करेगा। दिस इज ऑल अबाउट द चेंजेस इन पॉलिटिक्स। एंड इस पॉलिटिक्स की चीज की सबसे बड़ी ताकत जनता होती है, जनता की ताकत होती है, क्योंकि जनता जाग गई है। इसीलिए even though I have written conservative forces suppress the liberal movements in a number of occasions but realize for change, लेकिन अब ये भी चेंज की बात करने लगे। आपको याद होगा what is the meaning of conservatism? Conservatism believe the traditional values, traditional system, traditional political, social and economic order. They do not prefer for change, and even if they agree for the change, they try to maintain the pace of the traditional system. Over here also, from 1830 to 1848, whatever events had happened in different parts of Europe, it just signified that now these autocratic systems cannot stop the change. They have to give the way for new demands and changes. उन्हें परिवर्तन के लिए रास्ता देना होगा, नहीं तो वो उखाड़ दिए जाएंगे। कौन? कंजर्वेटिव सिस्टम उखड़ जाएगी, क्योंकि जनता की भावनाएं लगातार लिबरल नेशनलिस्ट की ओर जा रही है। तो यहां पर उन्होंने बीच का रास्ता निकाला। दे एग्रीड फॉर चेंज, वो परिवर्तन की बात के लिए तैयार हुए एंड ग्रांटेड अ नंबर ऑफ कंसेशंस इनको अपनी जनता में, जैसे वोटिंग राइट्स देने की बात की, प्रिविलेज जो राइट्स थे बेस्ड ऑन प्रिविलेज उसको समाप्त करने की बात है। अ नंबर ऑफ कंसेशंस दे हैड ग्रांटेड बट स्टिल दे वर नॉट रेडी टू लीव देयर ऑटोक्रेटिक पावर्स। मींस एक प्रकार से उन्होंने लॉलीपॉप दे करके लोगों को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश की, उस गुस्से को शांत करने की कोशिश की। But that struggle was continued. The quest for nationalism was again just reaching to its height. और यहाँ पे इन ऑटोक्रेटिक regimes को, conservative regimes को पूरे तरीके से आउट होना पड़ेगा। देखिए, यहाँ जो हमने जर्मन रीजन्स की बात की, इसी प्रकार की घटना इटली में भी है। 1848 इटली के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। When we are going to discuss about Italian unification, we will see about those events. So next topic, what we are going to see, we are going to discuss about German unification. German unification will be quite a live example how this idea of liberalism, this idea of nationalism had just suppressed all other forces. Now, this liberalism was going to be lasted in Germany, and a new form of government was going to develop, going to take its root in Germany. So next topic is German unification. Now students, a very important topic, that is German unification. On this particular topic, questions have been asked very on and often. First question related to the state the process of German unification, how Germany unified. Second one, state the role of Napoleon in the German unification. Third, what was Zollverein, how Zollverein helped in the rise of nationalism or unification in Germany. Fourth, who was Bismarck, and state the role of Bismarck in the German unification. These are the basic questions that are on and often asked in the examination. To get the answer of these all questions, we have to just go through the German unification process. There are some events that pave the path for the unification of Germany. Very simple. Most of the time when I speak to students, they say that sir, it is very much difficult to understand the process of German unification. We are facing very much difficulties to remember about the unification process of Germany. Not at all. There is nothing as such thing. Very simple things are there. Few things you have to remember.
as I have said. Earlier also I was speaking again and again that it was the Napoleon during his reign, he just reorganized the German state into a confederacy of 39 states. This is the first important act of Napoleon that paved the path for German unification. And when I was discussing about role of Napoleon, I have stated whatever work Napoleon had done, it was not directed towards the rise of nationalism. Whatever work he had done, reducing the German states from 300 German states to 39 confederacy of German states and introducing uniform code, it was only aiming to have a good administration, effective administration for the ease of its administration. Napoleon had introduced these changes, but ultimately in future these changes paved the path for the German unification. From 300, more than 300 states were existing before Napoleon. When Napoleon, through the number of war, through his conquest, Napoleon reduced those more than 3 states into 39 German states. The first goal of Napoleon is just from 300, more than 300 German states were reorganized into 39 states of German Confederacy. And second, uniform code, unified 39 German states, यानी इन जर्मन स्टेट्स में एक प्रकार के नियमों की सूचना, एक प्रकार के एडमिनिस्ट्रेशन, एक प्रकार की पॉलिटिकल सिस्टम, एक प्रकार की इकोनॉमिक सिस्टम, इसने जर्मन यूनिफिकेशन को काफी प्रबल बना दिया, उस भावनाओं को इसने सतह पे ला दिया। और इसके साथ एक और घटना हुई, दैट इज ज़ोलबोरिंग। ये भी आपको ध्यान रखना है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ज़ोलबोरिंग। इट वाज व्हाट वाज ज़ोलबोरिंग? इट वाज द कस्टम यूनियन ऑफ द जर्मन स्टेट्स। 39 स्टेट्स के अंदर ये ज़ोलबोरिंग एक कस्टम यूनियन थी जो इकोनॉमिक यूनिफिकेशन की बात करती थी, ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करने की बात करती थी, यूनिफॉर्म करेंसी की बात करती थी, वेटेड मेजरमेंट की बात करती थी। ये इंस्पायर्ड थी इसी नेपोलियन कोड से। तो इस इकोनॉमिक यूनिफिकेशन दैट हेल्प इन द पॉलिटिकल यूनिफिकेशन मींस फॉर द राइज ऑफ nationalism in Germany that resulted in the German unification। तो आपको स्टेट द रोल ऑफ ज़ोलबोरिंग अगर पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं कि ये एक कस्टम यूनियन था जिसने जर्मन स्टेट्स में इकोनॉमिक यूनिफिकेशन की बात की थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिफॉर्म करेंसी, वेट, मेजरमेंट और साथ में कस्टम ड्यूटीज को घटा के यूनिफॉर्म टैक्सेशन सिस्टम की बात करते हुए इसने की थी। तो इस यूनिफॉर्म जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इसने इंट्रोड्यूस की, यानी कि इकोनॉमिक यूनिटी की बात कर रही थी ज़ोलबोरिंग, जिसने लोगों को यानी 39 जर्मन स्टेट्स के लोगों को पॉलिटिकली भी बाइंड करने में मदद की। नेक्स्ट जो आपको याद रखना है कि कौन सा फैक्ट है, अभी मैंने बताया था नेपोलियन का, दूसरा मैंने बताया रोल ऑफ ज़ोलबोरिंग और तीसरा जो आप पढ़ चुके हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा यूरोप में नेशनलिज्म की चर्चा हो, एक बात बिल्कुल अंतस्थ कर लीजिए अपने मन में कि जब भी लिखनी हो सिंपल एक बात जरूर लिखेंगे, German unification, Italian unification, all kind of event were inspired by the French Revolution। अब French Revolution को स्पेसिफिक कर दीजिए, 1789 का नहीं लिखना है, यहाँ पे कर दीजिए कि French Revolution of 1813 and 1848 इसने जर्मन यूनिफिकेशन को इंस्पायर किया। आपने जस्ट अभी देखा था 1848 में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट गए थे, उस समय के प्रशा के राजा ने उसके प्रपोजल को पर्शिया को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन बस वही पर्शिया अब लीड करेंगे। याद रखिएगा, आउट ऑफ दोस 300 जर्मन स्टेट्स पर्शिया वाज द लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट मींस पावरफुल जर्मन स्टेट, एंड अंडर द लीडरशिप ऑफ पर्शिया जर्मन यूनिफिकेशन वाज गोइंग टू बी टेक प्लेस। तो हम लोगों ने देखा रोल ऑफ नेपोलियन, हम लोगों ने देखा कि ज़ोलबोरिंग का क्या यूज था, ज़ोलबोरिंग ने कैसे यूनिफिकेशन को प्रमोट किया, और हम लोगों ने ये भी देखा कि कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन इंस्पायर द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। और अब आते हैं जर्मन यूनिफिकेशन के हीरो की बात करते हैं। द आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन इट वाज ऑटो वन बिस्मार्क, द आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन हु बिलीव्ड इन द पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड, आयरन एंड ब्लड, रक्त और लोहे की नीति, यानी वो काफी सीवियर और कठोर रूल की बात करता था जर्मन यूनिफिकेशन के, विरोधियों को नहीं देखूंगा,
कठोरता से दमन करूंगा, युद्ध के लिए वो तैयार होता था। He was a great statesman, एक बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ था। कई बार पॉलिटिकल साइंस में विद्वान इसे जगलर कहते हैं, जगलर। आप जगलर का मतलब समझते हैं? आपने शायद सर्कस तो साथ देखते होंगे, कई बार आपने शो देखे होंगे जिसमें कोई एक बंदा एक हाथ में 4-5 बॉल रख करके एक साथ उसको कैरी आउट करता रहता है या बोतलों को करता है। He was called juggler। एक ही समय में वो अलग अलग बॉल से खेल रहा होता है। यहां की बिस्मार्क यही करने वाला है। अब समझते हैं जर्मनी की जो 39 स्टेट्स है, जर्मन रीजन है, उसकी कंपोजिशंस को, उसकी पॉलिटिकल सिचुएशंस क्या है। तो जर्मन जो स्टेट्स थे, जर्मन रीजन, ये 3 फॉरेन पावर के बीच बटी हुई थी, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया एंड फ्रांस। तो जर्मन यूनिफिकेशन की आवश्यक थी कि इन तीनों को जर्मनी की पॉलिटिक्स से बाहर निकाला। यही तो मैंने कहा था बिस्मार्क वाज अ ग्रेट स्टेट्समैन, जगलर। वो कैसे करता है देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल बिस्मार्क ने डेनमार्क को एम किया और डेनमार्क से उसने झगड़ा किया जानबूझ करके। 2 रीजन थे, फलस्तीन और सेल्सियस, उसको लेकर के झगड़ा किया जो डेनमार्क के पास थे। ये उस समय की व्यवस्थाएं थी जिस समय ऑटोक्रेटिक रूल चल रहे थे। अब उसने इस मुद्दे पे झगड़ा किया और व्हाट ही डिड, ही जस्ट एंटर्ड इनटू अ अलायंस विद ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया एंड ऑस्ट्रिया ने अलायंस बनाया और उसने मिलकर के डेनमार्क को डिफीट किया। दैट इज फॉर डेनिश पार्ट। इसमें डेनमार्क का इन्होंने बत्ती गोल कर दी। और अब क्या किया, जो फलस्तीन और सेल्सियस का जो इलाका था जो उन्होंने डेनमार्क से छीना, वो एक प्रकार से ऑस्ट्रिया ने अपने पास रख लिया। अब अगला स्टेप, नाउ इट वाज द टाइम फॉर ऑस्ट्रो-पर्शियन वॉर। अब बिस्मार्क ने एम किया किसको, तो एम किया ऑस्ट्रिया। इस समय तो ऑस्ट्रियन एम्पायर की स्थिति कमजोर हो रही थी क्योंकि ऑस्ट्रियन एम्पायर में जगह जगह ये रेवोल्यूशनरी इवेंट्स चल रहे थे। इस केस में बिस्मार्क हैड टुक द फेथ ऑफ फ्रांस। फ्रांस के साथ उसने एक अंडरस्टैंडिंग बनाई, फ्रांस को उसने राजी किया कि भाई हम ऑस्ट्रिया से वॉर करने वाले। फ्रांस ने उसको एक्टिवली सपोर्ट नहीं किया, आर्मी के साथ नहीं, लेकिन उसने क्या किया, उसके साथ सपोर्ट किया फ्रांस का। और ऑस्ट्रिया ने यानी बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के ऊपर हमला किया और इस वॉर में ऑस्ट्रिया को डिफीट का सामना करना पड़ा और सेल्सियस और होल्स्टीन का इलाका क्या हो गया, इसके पास आ गया, ऑस्ट्रिया के पास। सबसे मेजर प्लेयर जो जर्मन यूनिफिकेशन की बात आती है, दैट वाज द फ्रांस। फ्रांस वाज द मेजर पावर ऑफ यूरोप ऑन दैट टाइम, उससे बड़ा। नाउ बिस्मार्क हैड क्रिएटेड अ सिचुएशन जिसके कारण कि फ्रांस से उसका झगड़ा हो। ये वही पीरियड है जब फ्रांस इटालियन यूनिफिकेशन के प्रोसेस में भी इन्वॉल्व है। यानी देखिए फ्रांस, फ्रेंच एम्पायर बहुत बड़ी थी, इसके अपने क्षेत्र इटली में भी थे, ऑस्ट्रिया में भी थी। तो यहां की राजनीति भी इटालियन यूनिफिकेशन भी साइमल्टेनियसली शुरू हो चुकी है और जर्मन यूनिफिकेशन चल रही है। तो फ्रांस इस प्रकार से इंटैंगल्ड हो गया इटालियन यूनिफिकेशन में कि वो अपनी आर्मी को यहां खींच नहीं पा रहा। और ये मौका वहां इटालियन यूनिफिकेशन में काबू है, वहां का एक चांसलर और यहां बिस्मार्क, इन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग थी। सो मैंने कहा कि बिस्मार्क वाज अ ग्रेट स्टेट्समैन। तो जब इस परिस्थिति इन्होंने देखी कि फ्रांस फंसा हुआ है, तो बिस्मार्क ने फ्रांस के साथ युद्ध शुरू कर दिया और 1871 के वॉर में फ्रांस को भी इसने हरा करके जर्मन राजनीति से बाहर कर दिया। एंड इट वाज ऑन 18th January 1871 the unification of Germany was completed under the leadership of Austria. So आपको क्या याद करने हैं जर्मन यूनिफिकेशन में प्रोसेस बताने के लिए? रोल ऑफ नेपोलियन, 39 स्टेट्स मिलाना, 3 मिनट से अधिक को, यूनिफॉर्म कोड, नेपोलियन कोड जिसको कहते हैं। फिर आपको याद रखना है क्या, रोल ऑफ जर्मनी, इकोनॉमिक
unifications to political unifications inspired by French Revolution of 1830-1848, Frankfurt Parliament 1848 में इसका जिक्र करना है आपको। यानी कि जर्मनी में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज काफी मजबूत हो चुकी थी, ये बताते हुए काम करना है। और नेक्स्ट आपको बिस्मार्क के रोल को बताते हुए 3 चीजों का जिक्र करना है। एंड दिस इज ऑल अबाउट द जर्मन यूनिफिकेशन। ये सवाल जर्मन यूनिफिकेशन एज अ होल 5 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। अगर बिस्मार्क के विषय में पूछना हो तो ये 3 मार्क्स के पूछे जाएंगे। 1 नंबर में आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन, ये यहां से पूछे जाएंगे। कस्टम यूनियन ज़ोलवरिन, व्हाट वाज द ज़ोलवरिन ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर के, ऐसे ज़ोलवरिन के रोल के विषय में तो 3 नंबर में, नेपोलियन के रोल के विषय में भी यहां पे आपको 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। So I hope that you people are able to understand about the German unification. I have tried my level best to explain it. And next day we will discuss about the Italian unification.